Okay, so today we are going to uh, start our new topic, that is faults, right? In the previous session, we did discuss about folds, how they are formed, what are the different factors which determine that uh, the deformation is resulting in faults or fold, right? So we did uh, uh, learn in our previous session that when your rock is uh, in at great depth where temperature and pressure is high, it will more likely to form a fold. And when your rock beds are at a relatively shallow depth where there is not that high of a temperature and pressure is there, then it is more likely that fracture that your rock bed will behave as a brittle material, and it will develop fractures and result in faults, right? So your fault is your brittle deformation, whereas your fold is your plastic deformation, right? In your plastic deformation, it does not develop crack, but the deformation is your permanent. Whereas in faults, it develops fracture, it ruptures the rock bed, right? So when there is a rupture, one piece of rock bed will now become two, right? After a fracture, there will be now two pieces uh, or two blocks. So we will. So there are different parts of your faults. We will learn about the different terminology related to faults, and we will also discuss joints, etc. Okay. So what is fault plane? The surface that the movement has taken place within the fault is known as your fault plane, right? So it is a plane along which the movement has taken place in the fault, right? On this surface, the dip and strike of the fault is measured, right? So if you see in this diagram, this arrow is representing its strike, right? And the angle that this fault plane, this is your fault plane. The, this is the angle, this is the inclination of your fault plane. Okay, so the angle that this fault plane is making with the horizontal surface, horizontal bed, is known as your dip of the fault, right? So uh, now there are, as I've just told you, one rock bed will become or will be in two pieces after the fault is developed, or after there is a fracture or rupture, right? So what happens? One of the block, one side of the rupture or block on the one side of this fault plane will be known as hanging wall, and the block on the other side of the rupture or this fault plane is going to be known as footwall, right? So which fault is going to be known as hanging wall, and which wall is going to be known as footwall? Okay, so the suppose the block that is mm, that is the block that is on the upside of your fault plane is will be known as your hanging block or hanging wall block, whereas the block that is below your fault plane is going to be known as your footwall, right? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो आप बोलोगे कि मैं तो बिलो बोल रहा हूँ, पर बिलो तो यहाँ पे हैंगिंग वॉल ब्लॉक है ना? और मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके फॉल्ट प्लेन से ऊपर की that is lying above the plane, that is going to be known as your hanging wall. बट यहाँ हैंगिंग वॉल ये और ये तो नीचे लाई कर रही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं आता है। तो आप चेक करोगे जो द प्लेन ऑफ द फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट प्लेन है। फॉल्ट प्लेन अगर फॉल्ट प्लेन अगर 90 डिग्री है, if your fault plane is if your fault plane has a dip of 90 degree, right? Then both the blocks
uh, on either side of that fault will be side to side, means no, there will be no block that is above that fault plane and below that fault plane. Both the uh, both the block will be on the side if your fault plane is perpendicular. But in case it is not perpendicular, it is at some direction, it has some uh, mm, uh, it has some angle of dip or some tilt, then which block will be on the upside of the fault plane? समझ रहे हो आप? कौन सा ब्लॉक है जो fault plane के ऊपर वाली साइड में होगा? एक दूसरे के ये रिस्पेक्ट में दूसरे के कोई भी प्रोस, यहाँ आपका फुटवॉल, आपका एलिवेशन में आपके हैंगिंग वॉल ब्लॉक्स है। बट हम फॉल्ट प्लेन की बात करें, ये फॉल्ट प्लेन देखो, ये तो ये वाली साइड ऊपर है, ये वाली साइड नीचे है, राइट? बात समझ रहे हो? कोई एक सरफेस है ऐसे, द सरफेस has a dip like this, a plane has a dip like this, right? So which side will be the upside, which side will be the downside? Suppose this is side A, this is side B. Tell me, Nachiket, which side will be the upper side and which side will be the down, lower side? Yes, sir. सपोज ये आपका क्या है, एक प्लेन है जो कि इस एंगल पे, जो मैंने एंगल बनाना है, इस एंगल पे क्या है, उसका डिप एंगल है, ठीक है? ये प्लेन है कोई, Yes, sir. उसका ये डिप एंगल है इस एंगल। एक तो केस ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री पे रहो आपका प्लेन, Yes, बिल्कुल sir. 90 डिग्री पे। तो उस केस में जो, अगर उसके जो फॉल्ट प्लेन है उसके दोनों साइड में ब्लॉक है आपके सपोज, तो इस केस में कोई ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा, इस फॉल्ट प्लेन के ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, वो साइड बाय साइड होंगे इस फॉल्ट प्लेन के। बट सपोज आपका फॉल्ट प्लेन इज नॉट एट 90 डिग्री, इट इज एट सम एलिवेशन, इट इज एट सम एंगल, ठीक है? ये कुछ एंगल पर है आपका फॉल्ट प्लेन। अब बताओ इस केस में आपका कौन सा ब्लॉक ऊपर होगा, कौन सा ब्लॉक नीचे होगा फॉल्ट प्लेन के? सर डीप नीचे होगा। डिप डिप तो भाई एंगल है, जस्ट डिप इज द एंगल ऑफ यस इंक्लिनेशन, सर, आई एम एंगल नॉट ऑफ डीप। क्या बोल रहे हो आप? नो नो नो, ऑफ इंक्लिनेशन इज योर डिप, एंगल ऑफ, कि जितने एंगल पे वो टिल्ट कर रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द ओरिजिनल पोजीशन दैट योर रॉक बेड इज सपोज टू बी। बट ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड अदर फोर्सेस, राइट, सपोज उसमें वो हिल गया, उसमें टिल्ट आ गया, आपके जो ओरिजिनल जो आपका रॉक बेड था उसमें टिल्ट आ गया, so this tilt, this angle that the rock band is making with the original horizontal surface, this angle is going to angle or dip, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सपोज फ्रैक्चर आ गया, व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्रैक्चर आ जाए आपके रॉक बेड में, तो वो दो पीस में, एक रॉक बेड को वो दो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा फ्रैक्चर बीच में से, राइट? एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट द यस सर। फ्रैक्चर is block on the side of it, जो एक रॉक बेड आपको दो। अब अगर तो ये फ्रैक्चर बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे होता, सपोज इफ द फ्रैक्चर वाज लाइक दिस 90 डिग्री, देन जो उसके ब्लॉक थे दोनों साइड में, वो एक दूसरे, कोई भी इस फ्रैक्चर के जो आपका फ्रैक्चर प्लेन है, फॉल्ट प्लेन है, इसके कोई भी अबव नहीं था, कोई बिलो नहीं था, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो ये भी साइड में था, ये भी साइड में था। बट सपोज नो फ्रैक्चर प्लेन इज नॉट 90 डिग्री, योर फॉल्ट प्लेन इज एट सम एंगल, ठीक है? कि आपका फॉल्ट प्लेन है नॉट 90 डिग्री, इट इज एट सम एंगल। अब मुझे बताओ, सपोज ये वाली साइड आपकी ए है, ये वाला ब्लॉक आपका ए है, और इस ये वाला ब्लॉक आपका बी है, which of the block will be considered on the upside and which block will be considered on the downside, A और B? बताओ कौन सा ब्लॉक आप में गिना जाएगा कि जो फॉल्ट प्लेन के अपर साइड है, और कौन सा ब्लॉक फॉल्ट प्लेन के नीचे साइड गिना जाएगा? हेलो सर। अपर साइड को सर चलो बताओ बी अगर कौन होगा सा तो बी, block? बी लेंगे सर। नहीं, देखो आप देख रहे हो ये मेरा हाथ फॉल्ट फॉल्ट प्लेन यस को सर। रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? एक मिनट,
फॉल्ट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ए ब्लॉक है, यहाँ बी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ए ब्लॉक है, यहाँ पर बी ब्लॉक है। सो विच ब्लॉक विल बी कंसिडर्ड above the fault plane and which block will be considered below the fault plane? ये ब्लॉक है, यहाँ पर ए है, ये फ्रैक्चर प्लेन है, फॉल्ट प्लेन है, ये पे आपका यहाँ पे बी ब्लॉक है। सर ए को अपसाइड लेंगे। ये वाली साइड या ये वाली साइड? ये और सर ऊपर वाले साइड सर, आपका जो आपके सर जो राइट में है, आपके राइट में जो है। ये यस सर। यस। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये जो आपके फॉल्ट प्लेन से ऊपर वाली साइड है, इसको हम अप साइड लेंगे, और जो अप साइड पे होगा उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। हैंगिंग मीन्स लटक रही है ऊपर, ठीक है, हैंगिंग यस सर। ब्लॉक वॉल, हैंगिंग वॉल ब्लॉक। और जो ये निचले वाली साइड है फॉल्ट प्लेन से, इसको बोलते हैं आप फुटवॉल, ठीक है। यस सर। अब तो वही देखो, ये फॉल्ट प्लेन है, दिस इज योर फॉल्ट प्लेन। अब इसके ऊपर वाली साइड कौन सा है? ये है कि ये वाला है, हालांकि ये नीचे दिख रहा है आपके, नीचे है ये, किसे रिलेटिवली इसका एलिवेशन आपके फुटवॉल से नीचे है, फुटवॉल ब्लॉक से नीचे है। बट आप देखोगे ये आपका क्या है, फॉल्ट प्लेन। तो ये इस साइड है, ये वाली साइड आपकी अपर साइड है, ये वाली साइड क्या है आपकी लोअर साइड। बात समझ रहे हो? This side is your side that is considered above the fault plane, and this side is considered below the fault plane, right? So this is going to be known as your hanging block, and this is going to be known as your footwall block, right? And here arrow is showing the direction of relative movement, right? Yes. So this is the relative movement of the block along your fault plane, right? So originally it was like this. Originally it was like this. So if this is your fault plane, this is this side of the wall, or this block is supposed to be your hanging wall because it is above your fault plane. And this side, or the block of your block, uh, this side of your fault plane is considered as footwall because it is below. ठीक है नचिकेत, देखो जैसे ये यहाँ ये क्या है, फॉल्ट प्लेन है, राइट? दिस इज योर फॉल्ट प्लेन। सो ये वाली दिस साइड इज कंसिडर्ड अप साइड, क्योंकि ये देखो ऊपर लगती है आपके इसे फॉल्ट प्लेन से। दिस इज योर फॉल्ट प्लेन, दिस oblique line, this diagonal line is your fault plane, and this side is considered upside. So this block, the block on this side will be considered as your hanging wall, and this side will be considered as below your fault plane. फुटबॉल। So यस सर। side this side is known as footwall. अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी हैंगिंग वॉल आपके फुटवॉल से ऊपर ही होगी, जैसे ये लाइक दिस, यहाँ आपकी हैंगिंग वॉल खिसक के स्लाइड ड्यू टू दी रिलेटिव मूवमेंट, यहाँ आपकी जो हैंगिंग वॉल है वो नीचे आ गई है, बट फुटवॉल से नीचे आ गई है, बट still it is hanging wall. Why it is hanging wall? Because it is on this side of fault plane, right? यहाँ भी आपका hanging wall हो सकता है आपकी स्लाइड करके नीचे आ जाए, आपकी hanging wall स्लाइड करके नीचे आ जाए, but it will still be considered hanging wall because this side is considered upside, right? This side is considered upside from the fault plane. Okay. So here, so what happens here, that you are hanging, this was the original position. After the fault, your hanging wall has come down, right? यहाँ पे देखो जो मार्क करा था आपका ये that has come down.
So this is considered your normal fault. What is normal fault? When your hanging wall slides down. When your hanging wall slides down and the elevation of your hanging wall is lower than the footwall, this type of fault is known as normal fault. Getting my point? जब आपका जो hanging wall है वो slide करके नीचे आ जाएगा तो क्या बोलोगे आप? A normal fault. और रिवर्स फॉल्ट कब होगा? जब आपकी जो हैंगिंग वॉल है, इफ इट स्लाइड्स अप, ये हैंगिंग वॉल आपकी जो है वो स्लाइड करके अब चली जाए, दैट टाइप ऑफ फॉल्ट विल बी नोन एज योर व्हाट? रिवर्स फॉल्ट, राइट? तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, दिस इज योर हैंगिंग वॉल, नाउ दिस इज मूविंग इन द अपसाइड डायरेक्शन, दिस इज स्लाइडिंग, these arrows are representing the relative movement of the block. Okay, these arrows are representing the relative movement of the block, and here you can see that hanging wall is sliding upside uh, as compared to your foot wall, राइट? तो यहाँ एलिवेशन आपका हैंगिंग वॉल का फुट वॉल से ज्यादा है। देखो जो ये लेयर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेयर यहाँ पर हायर एलिवेशन पे है, सो दिस इज नोन एज योर रिवर्स फॉल्ट, राइट? These deep sleep fault, these are another classification. Deep sleep fault, what are deep sleep fault, strike fault, etc., that you will know. So देखो हुआ क्या, basically the forces of compression are acting on this rock bed, but this rock bed is not at such great depth, so it is behaving brittle. So the material or the rock is behaving as a brittle material, right? And fracture is developing, or crack is developing across this rock bed, and resulting in the reverse fault case, right? So you can see this is the diagram, you can see the fault, right? You can see here the discontinuity कि हाँ and here ये मिल रहा है। नो नो नो, दिस इज डाउनवर्ड, ये वाला जो रॉक बेड है इसका आपको यहाँ मिल रहा है corresponding, जो इसके कंटिन्यूअस बेड जो था वो कौन था? दिस वाज हियर, but this has come down. Okay, so this is your normal fault. Why normal fault? Because this is your hanging wall, this side of your fault is your hanging wall, and this side of your the footwall, and hanging wall, it has slipped down, so it is normal fault. Getting my point? Deep sleep. What are fault? Of the fault blocks is parallel to the dip direction, right? So इस केस में देखो आपकी dip direction क्या है? What is your dip direction here? What is your dip direction? This is the direction of the dip. This is the direction of the dip, this side, है ना? उसी डायरेक्शन में आपका फॉल्ट जो मूवमेंट आपके ब्लॉक्स की, इन द सेम डायरेक्शन द मूवमेंट ऑफ योर blocks are also happening in the direction of your dip, right? So this is deep sleep because your block slipped along the side of your dip, okay, right, along the direction of your dip. That is why it is known as a deep sleep fault, because this is the direction of your dip, right? This is the direction of your dip, and your block is also slipped in the similar direction, in the same direction, so it is your deep sleep fault. So there are two types of deep sleep fault. One is normal fault, movement is down dip. Reverse fault, movement is up dip. Okay, so deep sleep fault normal, when will there be normal deep sleep fault? When tension, when the force is causing the fault is your tension force, tensile force, then deep sleep fault, normal deep sleep fault will occur, right? Normal means जो hanging wall है that will come sliding down in the direction of your dip, right? ये extension हो रही है. And your reverse deep sleep fault will occur when the force is causing the fault is your compression force, right? तो इस केस में आपको कौन सा deep sleep fault देखने को मिलेगा? You will see reverse deep sleep fault. ये बात पता लग रही है नचिकेत? यस सर। पता लग रही है कि
आपका नॉर्मल डीप स्लीप फॉल्ट कब होगा और रिवर्स डीप स्लीप फॉल्ट कब होगा? डीप स्लीप किसको सर। बोलते हैं कि जब आपका डीप डायरेक्शन क्या है, ये वाली आपकी डीप डायरेक्शन है ना? यस यस सर। डीप डायरेक्शन मैंने क्या बोला था कि कैसे कैसे निकालते हैं डीप डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक। तो दिस इज योर स्ट्राइक। और डीप डायरेक्शन उसको बोलेंगे जैसे आप अगर यहाँ सपोज पानी डाल दो, अगर आप इस स्लोप पे पानी डाल दो तो आपका पानी इस डायरेक्शन में आएगा, राइट? सो सर डीप डायरेक्शन ओके। तो जो स्लिप हो रहा है आपका ब्लॉक, वो डायरेक्शन that it is that is why it is not your uh, deep fault, right? Force is causing the failure of the movement and force normal uh, normally fault. हेलो Okay, सर। for how long I was कितनी देर से मेरी प्रेजेंटेशन बंद थी? सर प्रेजेंटेशन आपकी चल रही थी, बट आपका सर आवाज में डिस्टॉर्शन है, और आपका वो है ना सर, वो फेस वो फ्रीज हो जाता है आपका आपका आप जो जिस वीडियो पे वो पूरा फ्रीज हो जाता है, और डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है सर। ओके 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 प्रेजेंटेशन तो ऑन ही था सर। ओके ओके। तो डीप स्लीप का पता लग गया ना, कि जब आपका जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी उसकी, डिप के डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है वो, दैट इज व्हाट इज यस नोन सर। एज डीप स्लीप फॉल्ट, राइट? और एक अब डीप स्लीप फॉल्ट भी आपके, योर डीप स्लीप फॉल्ट इज आल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज नॉर्मल फॉल्ट, अनदर वन इज योर reverse fault, reverse deep sleep fault. So when the force is causing this when the force is causing this movement is tensile force, then it will result in नॉर्मल डीप स्लीप, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो जब टेंसाइल टेंशन फोर्स होगी जो कि ये मूवमेंट क्रिएट कर रही है, उस केस में जो आपका फॉल्ट क्रिएट होगा दैट विल बी नॉर्मल deep sleep fault. What is normal deep sleep fault? In which hanging wall slides down, right? In which your hanging wall यस सर। slides down in the direction of deep. And when your forces that are causing the movement are compression forces, then what will happen? What will happen? The reverse deep sleep fault will be the result. Why? Because your hanging wall will slide in the upward direction, right? Deep direction में वो slide करेगा but in the upward direction.
ठीक है. So in case of compression, your reverse deep slip fault will be the result, and in case of tension, your normal deep slip fault will be the result. Okay. So there are different types of faults. Just one that I have just told you is a normal fault, right? Normal fault में जो आपकी hanging wall है, you can see this is what, this is your failure plane or fault plane. This is your fault plane. और fault plane के जो upper side है, ये upper side, this is your hanging wall, this is your footwall. So footwall layer is coming down. You can see ये इसके corresponding की ये layer थी, right? This bed is this bed. It is coming down. It is coming down. The hanging wall is coming down, so it is normal fault. Here you can see again. This is your footwall. This is your hanging wall. It is coming down. Hanging wall is coming down. This is normal fault. Okay. Next one is your thrust fault. So in thrust faults, the hanging wall has moved up relative to the foot wall, and deep angle is 30 degree or less, right? And then comes your reverse fault. It is similar to your thrust fault regarding the sense of motion, but the deep angle of the fault plane is 45 degree or more, right? तो आपका जो motion है in case of thrust fault and reverse fault is the same, in the sense that hanging wall will be moving up in both the cases. But what is the difference between thrust fault and reverse fault? That in case of thrust fault, deep angle जो आपका fault plane है, right, that जो deep angle है, is that will be 30 degree or less. And in case of your reverse fault, your deep angle will be 45 degree or more. Okay. So thrust faults usually formed in areas of compressional regime. Okay. So this is your thrust fault. You can see that deep angle is deep angle is very low, very small deep angle, 30 or less than 30. So it will be closer to horizontal, right? Not exactly horizontal, but closer to horizontal, 30 degree or less than 30. And reverse fault, in this case, your deep angle or your uh, fault plane will have angle greater than 45 or more. Okay, will have angle 45 degree or more. So these you can see are the example of a thrust fault. Then comes your strike slip fault. फ- ये जो आपका पीछे थे, ये क्या थे आपके डीप स्लीप फॉल्ट. ये जो आपके मूवमेंट इन द डीप स्लीप फॉल्ट, द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स was in the direction of the deep. But in this case, your strike slip fault में जो slip होगी, the direction of movement of the blocks will be or along the direction of the strike, not in the direction of the deep, right? So motion of the fault block is parallel to the strike direction in case of your strike slip faults. There are two types of strike slip fault. One is right lateral, another one is left lateral, right? So your strike slip faults are the faults that have movement along strikes. These are two types of There are two types of strike slip faults. One is right lateral strike slip fault. It is also known as dextral, uh, where the side opposite the observer moves to the right. Right. What is a right lateral slip fault? Where the side opposite to the observer moves to the right. And then comes your left slip fault, where the side opposite to the observer move to the left. Okay. तो ये कौन सा आपका, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज सिनिस्ट्रल, राइट. सो इस केस में अगर आपका ऑब्जर्वर, इफ यू आर हेयर if you are on this side, then it will be your left lateral strike slip fault, right? Note that the same sense of movement will also be observed from other side of the fault, right? अगर आप इस साइड से देख रहे हैं fault के, इस साइड से देख रहे हैं, if you are seeing from this side of the fault, you will see that ये आपका जो, where the side opposite to the observer, if you are standing here, this is the side opposite to you, right?
So it is moving towards the left direction. So it is going to be sinistral or left lateral strike. And if you are uh, seeing from this side, then this block will be the opposite to you. This block will be the opposite to the observer, and again this will be moving left with respect to you. So this is your left lateral strike slip fault. Okay. So your lateral or your strike slip faults are due to the shear forces. When the forces causing this fault are your shear forces, then you will see the strike slip fault. Okay. तो इस केस में आप मूवमेंट्स देख सकते हो. The movements here are the relative movements here are shown by these arrows along your fault plane. तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो स्ट्राइक के डायरेक्शन में है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिप. यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ब्लॉक, दे आर मूविंग along the direction of the strike, not in the direction of dip, right? So that is why they are known as strike slip fault, right? और अब ये बताओ, ये आप कौन सा है, लेफ्ट लेटरल है राइट लेटरल है? यहाँ तो चलो लिखा हुआ है, क्योंकि आप if you either stand on this side or this side. If you are standing on this side, what is the opposite block? What is the block opposite to you? If you are standing here, this is the opposite block, right? if if you are the observer, this opposite block is moving towards the left. And if you are observing from here, if you are standing here, then this block will be opposite to you. Again this is moving towards the left, so it is left lateral strike slip fault. Then comes your transform faults. So transform faults are the type of strike slip fault. They form due to the difference in motion between lithospheric plates, right? So they basically occurs where type of plate boundary is transformed into another. So main types of transform faults are ridge fault and ridge arc and arc fault. Then comes your deep slip fault. ये तो हमने करा ही था वैसे, स्टार्टिंग में डीप स्लिप फॉल्ट हम कर चुके हैं. हैव मूवमेंट पैरेलल टू द डीप ऑफ फॉल्ट प्लेन, तो ये हम कर चुके हैं. रिवर्स फॉल्ट एंड नॉर्मल फॉल्ट, this we have already done. Deep slip fault, yeah. Now deep slip faults have movement parallel to deep of the fault plane, that we know. Fault blocks bounded by normal faults that drop down or are up, or are uplifted are known as grabens and horsts respectively. Okay. यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्मल फॉल्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, ये डीप स्लिप फॉल्ट है. दिस इज योर डीप स्लिप फॉल्ट. अगर दोनों साइड पे आपका डीप स्लिप फॉल्ट हो रहा है, तो आपकी हैंगिंग वॉल कौन सी है? दिस इज योर हैंगिंग वॉल, इट इज कमिंग डाउन. तो इस केस में जो आपका ये बीच का ब्लॉक है, दैट इज सिंकिंग डाउन, that seems to be sinking down. This block is going to be known as graben. और यहाँ पे आपका देखो हैंगिंग वॉल कौन सी है, ये और ये, these two side walls are your hanging walls. So आपका जो बीच का ब्लॉक है, that is seemingly coming up, is known as your horst. Okay. So grabens are associated with the divergent plate boundaries and are called rifts. Okay, so the graben that are associated with the divergent plate boundaries are called rifts. Thrust fault हम कर चुके हैं. Strike slip fault we have done this, right? Then comes your oblique slip fault. Third type of fault is your oblique slip fault. इस oblique slip fault में both type का fault आपका हो movement होगी along the direction of dip as well as along the direction of strike. So ये बीच के डायरेक्शन में जाएगा आपका, नॉट प्योरली इन दी deep direction and not purely in the strike direction. It will move in between, right? So इसमें both side में आपकी डायरेक्शन होगी, deep side में भी डायरेक्शन होगी और strike side में की डायरेक्शन होगी. So this type of fault will be known as your oblique slip fault and have movement in with both vertical and horizontal components, right? तो इसमें कैसा होगा, जैसे आपके दोनों टेंशन और shear forces एक्ट कर रही हैं, या फिर compression and shear forces both are acting, then you will see
both types of movement. Here you can see movement along the strike direction, and here you can see the movement along the dip direction. So both types of movement will be there. Okay. So this is your deep sleep fault. This is also a deep sleep fault. Your deep sleep fault will be a normal fault, reverse fault. Then your strike slip fault will be left lateral strike slip fault, and right lateral strike slip fault. Then another one is your oblique slip fault. In your oblique slip fault, the movement will be due to the combination of these two. That is your deep slip fault and strike slip fault. Okay, so I think that is it for today. We will discuss joints in our next session. So if you have got any doubt, Nachiket, you can ask. नो सर, अभी तो नहीं।